Today I am here with the new video of accounting treatment of shares. In this video, we will learn about the numerical treatment of shares. मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए कंपनी फेस वैल्यू 4 टाइम्स रिसीव करती है. फर्स्ट वन एप्लीकेशन, सेकेंड वन इज अलॉटमेंट, थर्ड वन इज फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ वन इज फाइनल. और एक कॉल की आप 2 एंट्रीज बनाएंगे. तो इट मीन्स वी हैव टू मेक ओनली 8 एंट्रीज फॉर 4 कॉल्स. फर्स्ट, कंपनी विल रिसीव the application money from the shareholder. Then company due the amount which is received by the shareholder to the company. Then company due allotted money. Then company received allotted money. Then again company due the first call money. Then company received first call money. Then company due final call money, and then company received final call money. It means to say जो बैंक वाली एंट्री हैं वो सब रिसीव्ड की हैं और जिसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है वो सारी एंट्री बच्चों ड्यू की. नाउ कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स एट पार. XYZ कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 shares at the rate of ₹10 each calls as follows: ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call, and ₹2 on final call. Make the necessary journal entries in the books of XYZ company. Now see the solution of this question. We have 50,000 shares and application money is 2. It means to say company will receive 1 lakh rupees from the shareholder at the time of application. 50,000 into 2, 1 lakh rupees and 1 lakh rupees. First entry will be bank account debited to share application account. Then company due the application amount. The entry will be share application account debited to share capital account. Allotted money is 3. So company due the allotted money here 50,000 into 3, that is 1,50,000 rupees. Then company received allotment money and the entry will be bank account debited to share allotment account. Then company again due first call money. The entry will be share first call account debited to share capital account. First call is 3 rupees. Thus amount will be 50,000 into 3, 1,50,000 rupees. Then company received first call money here. Then company again due final call money. Share final call account debited to share capital account and amount will be 50,000 into 2, that is 1 lakh 1 lakh. Now final call money received by the company and entry will be bank account debit to share final call account and amount will be 1 lakh and 1 lakh. Now come to the next problem of shares. This condition is issue of shares at premium. As I earlier told in my previous video, shares cannot be issued at discount. Shares can be issued only 2 cases. It means first one is issue of shares at par or second one is issue of shares at premium. Red Chilli Production Limited issued 1 lakh shares at the rate of 10 each at 10% premium. Calls were as follows: 2 rupees on application, 4 rupees on allotment including premium, 2 rupees on first call and 3 rupees on final call. Make the necessary journal entries in the books of Red Chilli Production Limited. It means to say what is in this question. First of all we have to find out what is the amount of premium. 10% premium. It means 10% premium अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फेस वैल्यू का 10%. 10% of 10 rupees is 1 rupees and 1 rupees is included in the allotment. Thus 4 rupees में से सबसे पहले आप 1 रुपये माइनस कर दीजिए. 4 rupees minus 1, 3 rupees शेयर कैपिटल के लिए हो गए और 1 rupees हो गए प्रीमियम के. इस 4 rupees allotment में 1 rupees प्रीमियम का इंक्लूडेड है. इसका मतलब शेयर कैपिटल के लिए आपको 3 rupees मिलेंगे एंड प्रीमियम के लिए आपको 1 rupees मिलेंगे. रेस्ट क्वेश्चन विल बी सेम. Journal entries. Bank account debit to share application account. We have 1 lakh share and application money is 2. So 1 lakh into 2, here is 2 lakh rupees and 2 lakh rupees. Next, then application money due. Share application money account debit to share capital account 1 lakh into 2, again 2 lakh rupees. Okay. Now come to third entry. It is different entry.
share allotment account debit to share capital to security premium reserve account. We have 4 rupees total allotment. In this 1 rupees premium is included. तो शेयर कैपिटल के लिए आपके पास बचते हैं 3 रुपीज. तो 1 लाख इंटू 3 रुपीज, 3 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में आएंगे एंड 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीज आएंगे आपके पास प्रीमियम. इन दोनों का जो सम होगा वो 4 लाख रुपीज आ जाएगा. देन कंपनी रिसीव्ड allotment money. Then again company due first call money. First call is 2. So 1 lakh into 2 is equal to then is 2 lakh rupees. Then company received first call money here. Final call money is again 3. So share final call account debit to share capital account. 1 lakh into 3 is 3 lakh rupees. Then company received final call money amount from the shareholder. Now some important term used in share check. First one is private placement of share, and it is section number 42 of the Company Act 2013. When shares are allotted by the company to selected group of persons, not to the general public, through public offer, it is called private placement of share. This is an issue of shares to institutional investor or some selected group of person subject to prior approval of existing shareholder. There is no need of issuing formal prospectus and its cost and time saving method of raising capital. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को सोल्ड आउट ना कर एक सेलेक्टेड क्लाइंट को इशू कर देती है, तो ये जो प्रोसेस है बच्चों ये कहलाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. ये कंपनी तभी कर सकती है जब इसके लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी को परमिशन दे, और ये कॉस्ट सेविंग मेथड है और टाइम सेविंग मेथड है कैपिटल को रेज करना. Now very important topic, this calls in arrears. Any amount which has been called or demanded by the company from the shareholder but not paid by the shareholder till the last date mentioned in the letter of is called calls in arrears. Company can charge interest on this rate mentioned in article of association or 10% per annum as per table F. इसका मतलब है कि जितना पैसा कंपनी ने कॉल्ड किया, देखिए इस न्यूमेरिकल वर्जन में कंपनी कॉल्ड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, 8 रुपीज कंपनी ने टोटल कॉल्ड किया. इस कॉल्ड में से जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया है तो 5 रुपीज हो गया बच्चों पेड. और जो अमाउंट फर्स्ट कॉल की उसने पे नहीं करी है वो कहलाएगी कॉल्स इन अर्लियर. इट मीन्स कॉल्ड अप का जितना पोर्शन शेयर होल्डर कंपनी को पे नहीं करता वो अमाउंट कॉल्स इन अर्लियर कहलाती है, और ये कंपनी के लिए लॉस होती है. इसीलिए कंपनी शेयर होल्डर से 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट रिसीव करती है. एंड 2 रुपीज फाइनल कॉल स्टिल अनकॉल्ड बाय द कंपनी. इट मीन्स company called rupees 8 from the shareholder and shareholder not paid 3 rupees final call, 3 rupees first call to the company. It is calls in arrear per share. It is loss for the company, thus it will be debited at the time of received entry. Now accounting treatment of this is bank account debit, calls in arrear account debit to share allotment, first call and final call. It means कॉल्स इन अर्लियर कंपनी के लिए लॉस होता है और इसीलिए वो रिसीव्ड वाली एंट्री में डेबिट होगा. नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ कॉल्स इन अर्लियर. XYZ लिमिटेड इशूड 75,000 शेयर्स at the rate of rupees 10 each at rupees 2 premium. Calls were as follows: rupees 2 on application, rupees 5 on allotment, rupees 3 on first call and rupees 2 on final. All the money were duly received except one shareholder, Mr. Ram, had 2,000 shares, failed to pay allotment and both calls. Make necessary journal entries. इस क्वेश्चन में जो प्रीमियम की अमाउंट है बच्चों वो है 2 रुपीज और वो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है. 5 में से आप 2 माइनस करेंगे तो इट मीन्स 3 रुपीज शेयर कैपिटल के लिए होंगे और 2 रुपीज प्रीमियम के लिए. इस क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर है मिस्टर राम जिसके पास 2000 शेयर्स हैं. उस 2000 शेयर होल्डर ने ना तो अलॉटमेंट पे किया और ना ही बोथ कॉल्स पे की. बोथ कॉल्स मीन्स टू से फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. नाउ सी द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट एप्लीकेशन मनी इज 2 रुपीज, 75,000 into 2, 1,50,000. It means to say, second question is
Second point is share application account debit to share capital. Again 1,50,000 due amount. Third entry is allotment due. Allotment due means to say share allotment account debit to share capital to security premium reserve. 5 rupees में से 2 rupees premium है. It means 3 rupees for share capital. 75,000 into 3, 2,25,000 rupees. 75,000 into 2, 1,50,000. इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 3,75,000. नाउ फोर्थ एंड 3,75,000 रुपीज को आप क्रेडिट कर दीजिए टोटल शेयर अलॉटमेंट में. यहाँ पर एक शेयर होल्डर है मिस्टर राम, जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, 2,000 शेयर्स हैं. उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी 5 रुपीज के बेसिस पर, तो 2,000 इंटू 5 10,000 रुपीज है. 3,75,000 में से आपने 10,000 माइनस किया. इट मीन्स टू से कंपनी विल रिसीव 3,65,000 रुपीज from the shareholder at the time of allotment. Now first call D. First call is 3. Share first call account debit to share capital. 75,000 into 3 is 2,25,000 and here is also 2,25,000. Then again 2,25,000 को आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए. अब one shareholder Mr. Ram had 2,000 shares and did not pay first call money. First call is 3. 2,000 into 3 6,000 rupees. 2,25,000 में से आप 6,000 माइनस करिए, then you the company will receive 2,19,000 rupees from the shareholder at the time of first call. Similarly here, first call money is again 2, final call money is 2. So share final call to share capital 75,000 into 2 is 1,50,000 and 1,50,000 rupees. 1,50,000 को आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए रिसीव्ड वाली एंट्री में. Then 2,000 share into 2, 4 rupees not paid by the RAM. The company will receive 1,46,000 rupees from the shareholder at the time of final call.